Hello, good evening and good morning, everyone. Om Shanti. Om Shanti. Good morning, good evening. Om Shanti Saurabhai. Om Shanti Saurabhai. Good morning and good evening. Om Shanti Saurabhai. Shanti. Om Shanti Saurabhai. Good morning and good evening, everyone. Om Shanti. Good morning and good evening, everyone. So we're all on this journey of soul consciousness. और हम कुछ दिनों से यही बातें कर रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं कि how to increase, what are the different practices. और आज कल हमने देखा कि कैसे different ways by which it's easier to feel that I am a soul. हमने देखा अपने आप को जैसे अलग अलग रीति से मैं आत्मा सारथी, मैं आत्मा एक्टर, मैं आत्मा मेहमान। कैसे जैसे ही हम अपने आप को समझते हैं और अपने अंदर के जिसे कहते हैं आत्मा स्फेयर या हम कहें चित्त, जो चित्त है जिस पर कि जिसे हम कहते हैं नाम और रूप का ये पोल्यूशन चढ़ गया है, नेम एंड फॉर्म। कई बार ये बात आती है, हम सुनते भी हैं, मुरलियों में भी सुनते हैं, नाम और रूप से हमें परे होना है। तो नाइस वे टू अंडरस्टैंड दिस इज कि नाम और रूप जैसे कि देयर इज गोल्ड, और गोल्ड से हम बैंगल भी बना सकते हैं, नेकलेस भी बना सकते हैं, रिंग भी बना सकते हैं। So now there are three names and three forms. We have a bangle made of gold, a necklace made of gold, and a ring made of gold. अब ये तीनों का जो constituent है, the substance that has created the three is the same, is gold. पर अगर हम यही समझते हैं कि ये बैंगल ही रियलिटी है, या ये नेकलेस या ये रिंग ही रियलिटी है, तो इसको हम कहेंगे नेम एंड फॉर्म में अटक जाना। Then I'm not able to see that it is actually the gold, and it will change the form. I can melt the gold from a bangle and make it into a ring also. तो बॉडी कॉन्शियसनेस में हमारा फोकस नाम और रूप में रहता है. So the visible aspects, the name, the form, they matter to us. And that is what creates, जैसे कि एक मेंटल ब्लॉक कहे, और जितना हम सोल कॉन्शियस होते जाते हैं, then we are dealing with the energy of truth, the gold that is there. तो हम देख पाते हैं कि हाँ, बाहर से किन्हीं का कैरेक्टर या नेचर या पर्सनालिटी कुछ भी है, उनका शरीर है या नाम है, रूप है, पर अंदर से जो गोल्ड है, जो आत्मा है, हम सभी की नेचुरल क्वालिटी, संस्कार एक ही है. Then we are able to recognize in soul consciousness. It's like going beyond name and form, नाम और रूप से परे. तो हम 2 मिनट ये अनुभव करते हैं कि राइट नाउ जैसे ही हम अपने जीवन में देखते हैं किन्हीं का नाम हो या रूप हो, या हमारा भी इस कैरेक्टर का भी हो, फिर अब हम कुछ मिनट के लिए ये अनुभव करें कि ये जो नाम है या ये जो रूप है, ये तो फिजिकल एंटिटी है, फिजिकल
वर्ल्ड से ही रिलेटेड है। पर जो सत्य है इस नाम और रूप के पीछे, the being that is there is I, the soul. और हम सभी चाहे जिनके साथ रह भी रहे हैं या जिनसे हम मिलते भी हैं या जो भी हम अपने जीवन में जिनको भी जानते हैं, वो सभी हम उनके नाम और रूप से परे देखने का अभ्यास करें। नाम आता है तो नाम को हटा दे, बस एक आत्मा है, ओम है, और फिजिकल रूप से परे एक पॉइंट ऑफ लाइट है। तो हम अपने आप को इसी दृष्टि से अनुभव करें। I am a point of light, a soul. I am beyond any physical name and form. जितनी बार भी हम ये शब्द बोले या सोचे ओम शांति, जो पहला वर्ड है ओम, बहुत सुंदर है। ये ओम शब्द ही है जो हमारी रियलिटी है। ओम is who we are, the eternal self, the real self. तो जैसे ही ओम शांति, ओम में आत्मा अविनाशी और शांति ही मेरा स्वधर्म है। हम सोल कॉन्शियसनेस की बात कर रहे हैं और हमने सभी ने ऐसे समझा भी है, पर कई बार हम देखते हैं कि जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो कई बार takes time or maybe not always we are successful, and the reason for that is कि जो हमारी सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग है इस जन्म की और पिछले कई जन्मों की, वो बॉडी कॉन्शियसनेस की है। तो अभी उस प्रोग्रामिंग को रिप्लेस करके हमें सोल कॉन्शियस प्रोग्रामिंग भरनी, and this is why it takes some effort. कहते हैं छोटा बच्चा जो होता है 7 साल से पहले, तो he is just downloading, जो भी इंफॉर्मेशन है बाहर से वो डाउनलोड कर रहे हैं अपने अंदर। वो कहीं ना कहीं वो उसका प्रोग्राम क्रिएट कर रहा है। कई बार हम कहते हैं कि जो हमारा बिहेवियर है या हमारा रिएक्शन है वो किस पर डिपेंड करता है? वो केवल कॉन्शियस माइंड पर डिपेंड नहीं करता है, पर हमारे सबकॉन्शियस में हमारे बिलीफ सिस्टम्स क्या हैं, जो हम उस दिन समझ रहे थे, हमारे संस्कार, उस पर डिपेंड करता है। इसीलिए सोल कॉन्शियसनेस की जो ये जर्नी है वो एक्चुअली ये जर्नी है संस्कार परिवर्तन की जर्नी, कि हम एक एक करके जो भी हमारे पुराने बॉडी कॉन्शियसनेस के संस्कार या हैबिट्स पड़ी हुई है, नाम को देखना, रूप को देखना, देह को देखना, एक्सपेक्टेशंस में आ जाना, तो इन सब को रिप्लेस करके हमें सोल कॉन्शियसनेस, उसके संस्कार क्रिएट करना है। तो हम आज थोड़ा सा इसको देखते हैं और फिर एक छोटा सा वीडियो भी है, उसमें साइंटिफिकली
बताया है कि कैसे जो कॉन्शियसनेस, हमारे संस्कार कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे एटीट्यूड को, पर्सपेक्टिव को, तो वो भी हम थोड़ा देखेंगे। तो हमने लास्ट टाइम देखा था कि हमारे जो संस्कार है कैसे क्रिएट होते हैं। तो हमने देखा एक हमारी फैमिली, जो हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं, जो चली आती है इनहेरिटेंस, वो भी हमारे संस्कारों को अफेक्ट करती है। फिर जिस एनवायरनमेंट में बड़े हो रहे हैं, हमारे पिछले जन्मों के, और हमने जो इस जन्म में सीखा है वो भी, जिसके सबके बेसिस आधार यानी सबसे नीचे जो अंडरलाइंग इम्प्रेशंस हैं, वो हम आत्माओं के अविनाशी संस्कार, जो हर एक के, हम हर एक आत्मा के सेम है, जो हमारा ओरिजिनल नेचर है। तो मेडिटेशन में हम अपने ओरिजिनल जो संस्कार है, we get into touch with that. इसमें फिर हम देखते हैं डायनामिक्स ऑफ कॉन्शियसनेस। ऐसे हम में से कईयों ने देखा भी होगा पहले, पर मे बी गुड टू रिवाइज। इट्स जस्ट मन, बुद्धि और संस्कार। दिस इज आवर कॉन्शियस माइंड, which is the superficial, फिर intellect, which is the central, and then sanskar, which is the deepest part of our consciousness. तो जो हमारे संस्कार हैं, they are in the form of, say, memories, impressions, instincts, habits. जो भी हमारे belief systems सारे इससे चलते हैं। और हमारा मन, which has thoughts, संकल्प, emotions, भावनाएं, desires, इच्छाएं, ये सभी मन में होती है। और फिर इंटेलेक्ट में जजमेंट, डिसर्नमेंट, डिसीजन। और जो हम बुद्धि से निर्णय करते हैं, फिर हम जैसे ये जो डॉटेड लाइन है, इट इज काइंड ऑफ सेपरेटिंग आवर एक्सटर्नल वर्ल्ड एंड आवर इंटरनल। तो जो एक्सटर्नल वर्ल्ड है, इसमें हम देखते हैं शरीर है और कर्मेंद्रियां हैं। इसमें हम कुछ साइट्स हैं, साउंड्स हैं, अलग अलग इनपुट्स हैं, और हमारा आउटपुट हम देखते हैं वर्ड्स एंड एक्शंस। और इसके पीछे, द बैकग्राउंड, ऑल दिस डायनामिक्स इज टेकिंग प्लेस। तो हमने जो कर्म किया यानी आउटपुट हुआ, वो फिर ऑब्जर्वेशन के थ्रू हमारे सबकॉन्शियस मेमोरी बैंक में इम्प्रिंट हो जाते हैं, रजिस्टर हो जाते हैं, या तो हम कहें कि एक प्रोग्रामिंग बन जाते हैं, जो हमारे संस्कार बन जाते हैं। और ये प्रोग्रामिंग बहुत स्ट्रांग होती है। इसीलिए जो सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग है, यही हमारे थॉट्स को, हमारे भावनाओं को गवर्न करती है। इसीलिए हम कहते हैं ना कि स्पिरिचुअल जर्नी में भी टाइम क्यों लगता है, क्योंकि इट्स अबाउट चेंजिंग दोज इम्प्रेशंस। हम ज्ञान समझ सकते हैं, समझा भी सकते हैं, लेकिन जब तक हम संस्कारों को परिवर्तन नहीं करते हैं, या हमारा अटेंशन वहां नहीं होता है, तब तक एक पैल्पेबल चेंज हमें अनुभव जितना हम करना चाहते हैं नहीं होता। तो ये जो संस्कार हैं, यही हमारे मन को प्रभावित करते हैं। यानी हमारे मन, हमारे थॉट्स, हमारे फीलिंग्स, डिजायर्स, इनको प्रभावित करते हैं। और फिर हमने बुद्धि से निर्णय लिया, फिर कर्म किया, फिर संस्कार बना। तो इट्स लाइक अ साइकिल। अगर कोई सपोज नेगेटिव संस्कार है, तो नेगेटिव संस्कार है
तो वो भी फिर बढ़ता जाता है। कई बार हम एग्जाम्पल देते हैं, जैसे कोई एक संस्कार है, जैसे ड्रिंक करने का, सपोज सिंपल एग्जाम्पल। तो कहते हैं हम पहली बार पार्टी में गए और हमें किसी ने, फ्रेंड्स ने कहा कि व्हाई डोंट यू जॉइन अस फॉर अ ड्रिंक। तो मन ने कहा, मन में संकल्प आया, तो फिर दो संकल्प आएंगे कि नहीं ये हम करें या फिर नहीं करें। तो फिर हम बुद्धि के पास जाते हैं, तो बुद्धि से निर्णय आता है कि ठीक है एक बार हम कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेट्स डू इट वंस। तो सभी एक सोशल एक हमें निभाना भी होता है। तो एक बार हमने किया तो वो इम्प्रेशन हमारा रजिस्टर हो गया। फिर नेक्स्ट बार पार्टी में गए, तो नेक्स्ट बार भी हमें पूछा गया, तो फिर दो संकल्प थे। फिर बुद्धि ने निर्णय लिया कि नहीं लास्ट टाइम तो हमने किया था, ज्यादा कोई फर्क तो पड़ा नहीं, तो लेट्स डू इट अगेन। तो फिर हमने किया। तो जब 3-4 बार हमने कर लिया, तो नेक्स्ट टाइम व्हेन आई गो टू द पार्टी, I naturally see a drink and without even anyone having to tell me, मैं खुद ही उठाकर I'll have it. So at that point I have bypassed the intellect because sanskars have taken over completely. So then जो programming है वो ही, तो ये negative भी कह सकते हैं पर ये positive भी है। तो जब soul consciousness के भी संस्कार हैं, तो पहली बार जब हमने कर्म करते हुए हमने अपने आप को याद दिलाया कि नहीं, मुझे हर एक को आज के दिन बस आत्मा ही देखना है। आज के दिन आई हैव टू एक्सपेरिमेंट। मैं जिससे भी बात करूं, टेक्स्ट करूं या कॉल करूं, सबको आत्मा समझकर ही करना है हर चीज। तो एक बार हमने, बुद्धि ने डिसाइड किया, फिर हमने वो कर्म किया, फिर वो एक इम्प्रेशन बन गया। फिर नेक्स्ट टाइम हमने फिर किसी से बात की, तो फिर नहीं, पहले मुझे सोल कॉन्शियसनेस में टिकना है, उसके बाद ही फिर मुझे बात करनी। तो धीरे धीरे सोल कॉन्शियसनेस का संस्कार इतना पक्का हो जाता है कि फिर फोन करने के पहले हमें सोचने की भी दरकार नहीं होती, पर ऑटोमेटिकली वो संस्कार काम करने लगता है। तो ऑटोमेटिकली ये फीलिंग आती है कि हाँ हम आत्मा हूँ, सही बात कर रहे हैं। तो धीरे धीरे जैसे ये साइकिल जो है हमारे संस्कार फॉर्मेशन या क्रिएशन की, तो जो आई, द कॉन्शियस लाइफ फोर्स, द सोल, तो इस तरह से ये मेरा मुझ आत्मा कहे राजा का अंदर का सारा किंगडम ये चल रहा है। So the journey back to the self, it's all about how then my sanskars carry soul consciousness, then my thoughts carry soul consciousness, my intellect works on soul consciousness, and then my actions also reveal the vibrations of soul consciousness. यानी हर एक चीज में ये जो सोल कॉन्शियसनेस है, उसकी वाइब्रेशंस, उसका इन्फ्लुएंस आने लगता है। तो हमें संस्कार परिवर्तन करने के लिए, अगर पुराना कोई संस्कार है तो बहुत सिंपल है। पहला है कि आई स्टॉप क्रिएटिंग दैट संस्कार अगेन। तो इंटेलेक्ट को पावरफुल बनाएं, और अगर कोई संस्कार हमें परिवर्तन करना है तो उस संस्कार को फीड करना बंद करें। अगर वो थॉट्स आ रहे हैं तो हम कुछ और कर लें। और दूसरा, पॉजिटिव संस्कार हम क्रिएट करें। जितना पॉजिटिव संस्कार क्रिएट करते हैं तो उतना दे विल रिप्लेस द नेगेटिव संस्कार्स। अच्छा, तो अभी हम एक वीडियो देखते हैं, और एक डॉक्यूमेंट्री है, और उसमें अलग अलग साइंटिस्ट्स ने कॉन्शियसनेस के ऊपर, और कैसे हमारी कॉन्शियसनेस कैसे जैसे प्रोग्रामिंग उसको अफेक्ट करती है, और आवर एक्सपीरियंस ऑफ रियलिटी इज बेस्ड ऑन कॉन्शियसनेस।
और साइंस में भी कैसे अभी कॉन्शियसनेस को इंक्लूड कर रहे हैं, और उसके साथ में प्लेसिबो इफेक्ट के बारे में भी बताते हैं कि कैसे जो प्लेसिबो इफेक्ट है, यानी जब हम कुछ मान लेते हैं तो उसका तुरंत उसका इफेक्ट हमारे शरीर पर भी पड़ता है. तो ये सारी बातें, it's like a 10-15 minute video. So sit back, relax, and let's enjoy. Science is one way of understanding the world. It gives a pretty good picture for a lot of things, but it doesn't do very well in understanding the nature of consciousness. In order to then understand psychic phenomena, we probably need to revise or re-look at some of the assumptions underlying the way that science is developed. And so one of the ways of doing that is to question the assumption that everything starts with physics. Maybe there's something more fundamental than the physical world. And so what do we know that doesn't seem to be physical and yet quite real? It's our internal experience. It doesn't seem to have physical qualities to it, but we can't deny that we have experience. So maybe that's more fundamental. If that's the case, then you think of the scientific disciplines as a hierarchy with physics at the bottom and then chemistry, biology, psychology. Maybe there's something that needs to go below physics. So a number of thought leaders today across the board in science are beginning to say things like, what's more fundamental than matter and energy is information. It's somewhat more abstract than what we think of as physicality, but from information you can create matter and energy. You can describe it and form a universe based on information. Well, all of that is closely aligned with the esoteric traditions, which say ultimately that consciousness is more fundamental in the physical world. It all comes from consciousness somehow. Whether it's Kabbalah or Neoplatonism or Hermeticism or you name it, you find it in almost every esoteric tradition, a way of thinking about how consciousness in its primordial state turns into reality. That's idealism. That's the notion that only the mental exists, and that in fact the universe is mental primarily, and that all the physical universe simply emerges based on the principles of that mental realm. Top-down causality. When you combine the consilience of the neuroscience of consciousness, philosophy of mind, of quantum physics, which is the most fundamental presentation of the mind-body question, and they're all converging to say consciousness is the one thing that exists, that all of physical reality emerges out of that. It just becomes obvious that this is a mental universe. Mind has tremendous power over matter, and we prove that all the time as humans with our own health. My basic education in the university was understanding the nature of cell biology, how cells work. So I was a stem cell research scientist at University of Wisconsin School of Medicine, where I was a professor, and at Stanford University later, where I was a research scientist expanding the knowledge of epigenetics. To understand the nature, what is the difference between genetics and epigenetics? When I say this character, this disease is under genetic control, that is the belief that genes turn on and off and made the disease. This makes us a victim because, as far as we know, we didn't pick the genes, and here the genes turn on and off by themselves. Then you realize, I'm just like a time bomb. And one day the gene goes boom, and then I get cancer. I'm a victim. But the new science, epigenetics, which means control above the genes, which turns out to be environment, but our perception of the environment is what controls the genes. I say, well, if perception and environment control genes, we as individuals, we can control our environment, and we can control our perceptions. Consciousness, lifestyle, belief systems, these are the ultimate controls of the gene. So the relevance is important, is because, as we know, that if you got a cancer gene and that's what you believe, then you think I'm going to get the cancer, and then you get a cancer and you say the genes did it, and now we know, no, that there is no cancer gene. There is not one gene that causes cancer. Genes are correlated with cancer, meaning if your life is not in harmony and you have one of these genes, you can activate a cancer. But the point is, having the gene does not cause the cancer. 50% of the women that have the same BRCA1 gene never get the cancer.
The point is very important. So we have to help people take them from the belief I'm a victim and give them the science that no, your consciousness is creating this life experience in here. Your consciousness is controlling your genes. And so my evolution took me from the genes to the role of the mind, and that the mind is the absolute control of our biology. And when we give our power to other people, their beliefs control our biology. If I buy their story and it's not a good story, then I've just altered my life. And this is why we need to take the power back. And people say, oh, that positive thinking doesn't really work, but that's not true. The best example of positive thinking in a scientific study is called placebo. You have a disease and the doctor says, here's this new pill and it's the brand new science and it's gonna cure you, and you believe it. And you take the pill and you get well. Then you find out the pill was a sugar pill. So then you're left with, so what made me well? It's not the sugar pill, it was the positive belief in that sugar pill and how it's going to help your life. Sometimes mechanistic doctors try to dismiss all alternative healing by saying it's nothing but the placebo effect. But the fact is the placebo effect works. And in fact, regular medicine depends on placebo effects as well. Does it really matter what we call it? The fact is it's happening. And it shows that the belief and the expectation are actually influencing the healing process. But people don't recognize negative thinking is equally powerful, but it works in the opposite direction. The American Psychological Association has recognized 90% of doctor visits are due to stress. And it turns out that stress is the major cause of problems in health. And that stress is a consciousness issue. So if you can control stress, then you can control your health. And that's what the new science is all about. So the mind-body connection is now recognized as a thing. The next stage are things like affirmations. Affirmations, in terms of the literature of affirmations, rivals the number of books sold for religious texts. It's extremely popular. It's been around a long time in many different versions. There's some people who will say, well, if you want a gold-plated Mercedes, you just think about it really hard, and there it is. And now you have a gold-plated Mercedes. That's yours somehow. So, of course, nothing works that simply. But because of the association between the idea of you create your own reality and suddenly manifesting mounds of gold out of nothing, then people, of course, would be very reluctant to say, well, I believe in that because it sounds crazy. In fact, as stated, it is crazy. But on the other hand, that doesn't mean that affirmations don't work, that they don't manipulate the world in some way. So I personally believe, based on the experimental work that I've done, that we do create our own reality on many layers. So even among my colleagues, what I just said is probably considered controversial, because I'm more liberal-minded than some of my more conservative colleagues. But based on the experiments that I've done, the way that I interpret it, I think that we actually do, to a small extent, manipulate the world in a literal way and not simply in a psychological way. If you look back at various spiritual traditions, even from way back in India, intention was considered very, very important. And in fact, the term in Sanskrit is Sankalpa. It means that when you have a strong intention, that you can literally move ahead much, much more quickly than you can if you don't have an intention with whatever you want to do. And people might say, well, that doesn't always happen to me, but what we often notice with an intention is that there's the surface of our intellect that says, for example, I want to lose weight. But underneath, there's a stronger, what I would call my alligator brain or my unconscious desire to eat wonderful, rich foods, and they often compete with each other. And so you think your intention is to lose weight, but you may have a stronger intention for something else, or your intention may be distracted. Then we might look at our distractions or the things that might keep that intention from happening, like maybe a fear of actually being successful in the world that some people may have. We have to understand during development, the brain is the equivalent of a computer. And the beginning part is it's got an operating system, so now the brain is going to work, but it doesn't have any programs. So nature creates the first 7 years of a child's life to download programs.
A child below 7 has a vibration of the brain that's less than conscious. It's called theta. You can't give an infant a book and say, study the rules of how to be a member of a family, study the rules of how to be a member of a community. Thousands of rules. So how does a child get a chance to learn? He's not even able to read. And the answer is, it doesn't have to, because the brain is in theta, which is hypnosis. It watches the community, and whatever it sees is downloaded just like a video recorder. Watch my mother, watch my father. See how they did it? I record that. Now I have a program. So for the first 7 years, we download behavior, but from other people. And the problem is this: most of their program behavior is not very positive. So we're actually downloading programs that are not helping us. And this goes into the subconscious. So the subconscious is like a hard drive in a computer. It's got programs, okay? And the conscious mind is the creator, like the one that types on the keyboard. But you still have to work through the program. So here's the interesting conclusion. 95% of our life is coming from the program. Your life is a printout of your program. Conscious mind is wishes and desires. That's what you want from your life. Health, happiness, good relationship, good job. Conscious mind, creative. But when conscious mind is thinking 95% of the day, the automatic behavior is coming from the program. Very often, we don't realize the concepts that we're holding inside of us about either I can't do that, or this is impossible, or things like that. And I think that's an interesting word that we use often, psychologists use it as well, that we project onto the world what our story, which is our own filter, our own lens, is telling us about it. We have in our head very positive thoughts, but our life doesn't match the thoughts. If the life isn't working well, if we say you're a victim, that means I'm powerless. Oh, it happened to me, I'm just a victim. I go, there are no victims. We are creating what we are. Om Shanti. A little clip from a documentary, और इसमें यही उन्होंने बताया कि I am not a victim. जैसे they gave examples from different aspects. जैसे कहते हैं genetics भी, even अगर शरीर में कोई genetic बीमारी है, पर वो भी control कर रही है consciousness. Consciousness is activating or deactivating that gene. फिर उन्होंने बताया कैसे placebo effect, यानी जो भी हमारा belief है, उसके आधार से एक sugar pill भी दवाई का काम करने लगता है. तो I, the consciousness, I am actually creating my world. तो फिर उन्होंने कहा जैसे संकल्प, तो ये संकल्प, ये तो consciousness से ही उत्पन्न होता है. तो जो हमारा सबकॉन्शियस है, वो हमारा प्रोग्रामिंग, जैसे वही प्रोग्राम हमारी लाइफ को गवर्न कर रहा है. तो जितना जितना हम सबकॉन्शियस में सोल कॉन्शियसनेस के संस्कार क्रिएट करते हैं, जैसे उन्होंने कहा कि छोटे बच्चे होते हैं, तो छोटे बच्चे when they are infants, they just download, जो भी देख रहे हैं वो डाउनलोड कर रहे हैं, और वही उनके अंदर प्रोग्राम डेवलप हो रहा है, और वही प्रोग्राम फिर उनकी लाइफ को गवर्न करता है. तो ऐसे ही हमारा जो बॉडी कॉन्शियसनेस के प्रोग्राम्स अंदर पड़े हुए हैं, उनको परिवर्तन करने के लिए सोल कॉन्शियसनेस के जो हमें संस्कार अभी क्रिएट कर भी रहे हैं और आगे भी कर रहे हैं. इसीलिए हम सुनते हैं कई बार, कहते ड्रिल करो, मन के ड्रिल करो, अशरीरी होने का अभ्यास करो, बार 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 बार. इसीलिए ताकि ये प्रोग्रामिंग हमारी एकदम सेट हो जाए, ताकि फिर जब ये सिचुएशन आए, so then that subconscious works naturally. तो उस टाइम हम कॉन्शियसली थॉट क्रिएट करें, मैं आत्मा हूँ, कॉन्शियसली गुड विशेस रखे सबके लिए, तो दैट बिकम्स डिफिकल्ट. पर जब हमने बहुत इसकी प्रैक्टिस की हुई है,
और हमारा प्रोग्राम जो हमने देखा डायनामिक्स ऑफ कॉन्शियसनेस के थ्रू, जो हमारा प्रोग्राम पॉजिटिव बन जाता है तो ऑटोमेटिकली फिर वो गवर्न करने लगता है। हमारा अनुभव फिर उससे कहते योर लाइफ इज 95% governed by the programs that we have created. The spiritual journey is a very personal journey, and this journey is all about चाहे बाहर जो भी दिखे जो भी हो, पर अंदर में यही है कि कैसे I am creating programs, inner programs, so that I'm coming closer to my truth, my reality, और परमात्मा का भी अनुभव हम अच्छी तरह से करते और आगे चलते हैं। आज हमने थोड़ा ये डिस्कस किया, कल हम और डिस्कस करेंगे कि कैसे हम इस थॉट को गहरा बनाए कि हम आत्माएं कहाँ के निवासी हैं। ऐसे तो हमें आंसर पता है, पर फिर भी इस थॉट को हम और गहरा बनाए कि हम रहने वाले कहाँ के, कहाँ से आए हैं और कहाँ जाना है। तो कल हम ये बात करेंगे। Let's take a few moments और हम अनुभव करें कि शरीर के अंदर विराजमान हम आत्माएं, पॉइंट्स ऑफ लाइट, और जो हम आत्माओं की ओरिजिनल इटर्नल प्रोग्रामिंग है वो है हमारे ओरिजिनल संस्कार, संस्कार ऑफ ट्रूथ, पवित्रता, शांति, प्रेम, खुशी, आनंद और शक्ति। यही हम आत्माओं की नेचुरल नेचर है, यही हमारी प्रोग्रामिंग है। बाकी सब इस फिजिकल दुनिया से हमने एक्वायर किए। So I, the soul, I stay in being myself. I am the being. और हम हर एक से जब इंटरैक्ट कर रहे हैं तो भी इस कॉन्शियसनेस में कि I am the being interacting with the other being. इसको हम एक और रीति से समझते हैं कि I the being, this is my reality as a point of light. पर जब हम एक्शन कॉन्शियस होते हैं तो we begin to take our sense of self-respect from doing, जो भी हम कर्म करते हैं, and then also having, जो हमारे पास है, जो हमने एक्वायर किया है। और जितना जितना हम कर्मों से और जो हमारे एक्वायरमेंट्स हैं उससे अपने आप को रिलेट करते हैं तो वो जैसे एक फॉल्स सेंस ऑफ सेल्फ इमेज क्रिएट करता है जिसको हम कहते हैं ईगो। तो हमने कर्मों से अपने आप को पहचानना शुरू किया, पर कर्म करने वाले में आत्माओं जब ये भूल जाते हैं तो फिर ईगो क्रिएट होता है। और ईगो अलग अलग मास्क के रूप में हमारे ऊपर लेयर्स चढ़ी हुई है, ईगो मास्क। तो जब हम सोल टू सोल कम्युनिकेशन करते हैं, मैं आत्मा दूसरी आत्मा से बात कर रही हूँ, तो इन जो ईगो मास्क हैं इनके बियॉन्ड जो ईगो मास्क हैं उनको देखे पर नहीं देखे। जैसे आज हमने देखा सुना सी नो इविल हियर नो इविल, इसका अर्थ क्या है
evil यानी जो बाहर के एक्वायर्ड है उनको नहीं देखना है, बस आत्मा को देखना है। क्योंकि अगर हम जब डूइंग मोड में ही इंटरैक्ट करते हैं, हैविंग मोड में इंटरैक्ट करते हैं, so then there is conflict. तो बस मैं आत्मा और ये अपने जो इटर्नल प्रोग्रामिंग है उसी से हम एक दो के कनेक्शन में आए, यही सोल कॉन्शियसनेस। और अगर हम सोल कॉन्शियस नहीं है तो इट मीन्स कि वन और द अदर ईगो मास्क्स इज वर्किंग beneath, and that will color our emotions. Cha Om Shanti. Thank you, everyone, for time, presence. Would love to open up and hear from others. Any thoughts? Shanti. Shanti, thank you, Sarabhai. I really like that documentary you have shared today. In that documentary, they have talked about the epigenetics, which is the very new thing in our pediatric conference that has been discussed. That was 2 years ago as well, and I recently did the pediatric conference. So whenever we give therapy to children, whenever there is anxiety and depression, we give therapy and they change their behavior, then they have seen the change in epigenetics, epigenome. So that is a changing sanskar, that is governed by sanskar, epigenetics. So that is very true. From scientific way, everything in this, our spirituality actually so scientific. Everything is it is proved by science. So it's so real. There is I feel like there is no margin of not believing on our spirituality. It's so true. Everything is, even the consciousness, the in documentary they have said, whatever we believe, we are creating the reality. So yeah, very good, Sarabhai. And also the first few slides you have shown the inner world and outer world. That inner world is our, I feel like it's our inner engineering, how we are creating sanskar. And once I the soul, I know that I am the one who created sanskar and habit, then I have that power to change it. And this spirituality has, Rajoga meditation has taught us how to change new sanskar, like change the old sanskar and how to create the new sanskar, which is related to soul consciousness. So yeah, thank you, Sarabhai, for your all the effort. Thank you so much. Thank you, Om Shanti. No, I'm glad that you shared about epigenetics, and yeah, it's very interesting the way they describe. तो कई बार we become victim conscious, but using understanding this, we realize that it's actually governed by our consciousness.
Thank you, Saurabh. It was a very meaningful and very enlightening presentation and power of consciousness. It shows how important it is for us to think the way we want to create the world. And we can create the world. It all depends on our thinking and our own insight. So it all shows that we are in control of everything around us. So that surely puts some pressure on us because we have to do everything. But surely we should not be blaming the circumstances or anything outside. It's all coming from inside. Very powerful presentation, and thank you so much. Om Shanti. Om Shanti, Saurabh bhai. Om Shanti. वेरी नाइस, वेरी नाइस प्रेजेंटेशन। क्योंकि जब हम किसी को सोल में देखते हैं तो एक शुद्ध पवित्र आत्मा है, उस रूप में देखते हैं तो उसके वाइसेस हमें नजर नहीं आते, उसकी प्यूरिटी, उसके गुण हमें नजर आते हैं। तो किसी के प्रति अगर किसी ने हमें अपमानित किया, ग्लानि किया, तो जब हम उसके बाह्य रूप को देखते हैं तो वो हमारे अंदर वितृष्णा की भावना आती है, अच्छा नहीं लगता है। लेकिन जब हम उसको देखते हैं, ये तो प्योर सोल है, शुद्ध पवित्र आत्मा है, तो जब आत्मिक रूप में उसको सोल कॉन्शियस में रह के हम उसको सोल देखते हैं तो उसके फिर बुराई कुछ भी नजर नहीं आती। तो फिर हमारे को भी अंदर से खराब नहीं लगता है सामने वाले के प्रति, क्योंकि वो जो भी कुछ बोल रहा है वो बॉडी कॉन्शियस में आके बोला है, और हमने भी जो देखा बाहर का रूप ईगो में रह के देखा। तो इसलिए बाबा जो हम बच्चों को कहते तुम एक अपने को आत्मा समझो, सामने वाले को आत्मा समझो, तो ये सारे अंदर ऊपर की जो आ जाता है, जो हम नहीं देखना चाहते हैं, जो देख लेते हैं और जिससे हमारा मन खराब हो जाता है, वो फिर नहीं होता। तो वो सुप्रीम टीचर हमें कितने सुंदर सुंदर तरीके से ये रियलाइज कराता है कि बच्चे, ये दुनिया गंदी है, इसलिए तुम इसको नहीं देखो, तुम अपने को भी आत्मा समझो और सामने वाले को भी आत्मा देखो। तो जब ये हमें रियलाइजेशन होता है और उसको हम जब उस रूप में देखते हैं तो बाहर की सारी कड़वाहट वो सारी ऑटोमेटिकली धुल जाती है। जो रिलेशन के रूप में भी आ जाती है बाहर से कड़वाहट, वो भी खत्म हो जाती है। तो इसीलिए ये जो प्रैक्टिस है सोल कॉन्शियसनेस की, जो बाबा, और कहीं ये ज्ञान नहीं, एक बाबा आके हमको ये रियलाइजेशन कराता है कि तुम ये हो, सामने वाला भी शुद्ध आत्मा है, पवित्र आत्मा है, उसी रूप में उसको देखो और उसको रियलाइज करो। तो बाहर का जो आ जाता है रिलेशन के रूप में या और भी किसी XYZ आता है, वो फिर नहीं आएगा। थैंक यू सौरभ भाई। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति सौरभ भाई। ओम शांति। आज आपने बहुत ही very meaningful video you have shown, and that is actually everything is epigenetic. How we are responsible for making our sanskar, and whatever genetic diseases are there can be controlled by our sanskar. Just like kids' brain download everything from the childhood and whatever they download, that become the sanskar of that child. So we are responsible for our sanskar. If we made some bad thing, so our sanskar become bad. If we make good thing, our sanskar become good. Om Shanti Bhaiji, very nice. Today's video is very effective. Can I get the copy of this video? Yeah, sure. Yes. How? It's a documentary. It's on YouTube. Yeah. It's called Who We Are. Okay. So it is very effective and I want to hear so many times. Thank you so much. So you can give to Rinku and Rinku can pass me. Sure. Yeah. Okay, thank you. Om Shanti. Saurabh bhai. आप ग्रुप में भी डाल सकते हैं, किसी ग्रुप में भी डाल सकते हैं।
भाई बड़ा effective है and very knowledgeable it is. Thank you so much. Om Shanti. लेकर आ गए क्या? This is such an important aspect, Brother Saurabh. The first 7 years of life are so crucial. And we should be so careful with those kids, whatever they are absorbing. And I wish I knew about it before, but I can definitely pass on to my patients. The first 7 years are the major years where we can build their sanskar and their habit, and it is so deep. Yes, Rinkuben. And that's why 8-year-old is called mini adult, because by 8 years, they are little, but they are all mature. So everything development by 8 years, they can understand everything. So 8 year is also called mini adult in pediatrics. Wow. Yeah. And is up to 7 years called the formative years then? Say that again, Is up to 7 years. Uh-huh. Is that called the formative years? Yes, it's still, because still everything is, they are observing, they are learning. So exactly that word we don't use. Where did you get it? I just read, there are certain books when Simran and Gautam were growing up. I used to read a couple of books, Who Stole My Cheesecake and things like that. So they stress upon the importance of the earlier years, the formative years. Yeah, I've heard about that word as well. Yeah, they're surely formative years. Okay. Yeah, in medically, like we haven't used that. But by 8 years, everything, like first 7 years is the crucial. First 2 years is the most crucial, but up to 7 years. And then that is the time environmental effect. And that is the epigenome. That is the one which is forming, affecting and making they make the sanskar, and that affects the epigenome. What is epigenome, Kusumban, if you could explain it again? Yeah, this is a new one. So I recently learned from 2019. I did the pediatric conference, and that was the epigenetics. So there is a gene, and superior to gene is the epigenome. So it's not in the DNA. It's actually not inside the DNA. It's outside. So, and it is the one which is governed by the sanskar. And they don't say it as a sanskar in pediatrics. They are saying like whenever they change their habit, then they have seen the change in epigenome. And it's like impressions, I think. This is a new thing for me too, because before when I have been in pediatrics, working in pediatrics for the last 8-9 years. And then 2019, I did this conference, and they have mentioned this is a new thing they have been seeing. And whenever they change their, like anxiety patient, they have become better in their thing, and they have seen the change in the epigenome. And exactly that's what I saw that in documentary too. So this epigenome can change anytime in life, or Yes, for 7 years? Yes, that can be changed anytime in life. But more crucial will be in the first 7 years, first 8 years. It is more because that is a time, it's very much vulnerable. That's the time. So anything can be affected, like any kind of environment can have effect on that kind of brain. So more vulnerability will be more, but it can be changed at any time. It should be true for adult too. So we did not discuss about adult because it was in the pediatric conference. So it should be, I can find that out about adult. It should be true to adult too, because they said
when they see the change in behavior and the like habit, everything has changed, and they have seen that change in epigenome. And today in the documentary, they have talked about the epigenome, so it should be true for adult too. That's very nice. Thank you for letting us know. Thank you. Yes, thank you, Saurabh, for that beautiful video. Yeah. थैंक यू। इसमें आगे बहुत एक और अच्छी बात आती है कि जैसे कि they've given a real example, जैसे अगर पेरेंट्स को बच्चों को कुछ बोलना है और पेरेंट्स को हमेशा लगता है कि हम तो बच्चों के भले के लिए ही बोल रहे हैं, पर if we raise our voice और अगर हम जोर से बोलते हैं, so what the child is absorbing is actually not what you're trying to tell them, but he's absorbing your frustration or anger. That's what the programming the child is downloading. आपका इंटेंशन तो वो नहीं है, आपका इंटेंशन अच्छा बोलने के लिए, इसीलिए it is so important the way we talk. It's like, and I'm sure doctors, you all know it's much better. But then, and that's why Baba also says, like the way we communicate, और जैसे नहीं आज भी था कि पहले आवाज से परे, means that vibration of silence, and then to come into sound means then I'm not, coloring my whatever I'm sharing with any, emotions or vibrations of any vices. So that's so important. Thank you. Yeah, it's a long documentary. It's like an hour or so. Maybe one day when we have time, we can watch the entire documentary. It's all about consciousness and who we are and some latest findings that scientists have made. It just allows us to appreciate what Baba is teaching us a lot. Could you please forward the documentary on our group so that we could just watch it on leisure time? Yeah. Thank you. Shanti. Any other thoughts anyone like to share? So then have a great rest of the evening and the day with Baba. Good night and good day. Good night. Thank you. Om Shanti. Thank you, Saurabh. Thank you. Om Shanti. Thank you, Saurabh. Good night. Om Shanti. Om Shanti. Have a nice day. Good day. Good night. Have a nice day. Good morning, Rajesh. Thank you, Baba. Thank you, family. Thank you. Om Shanti. Om आप लोग Shanti. अच्छे हैं सभी? जी 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 सभी अच्छे हैं? जी हाँ। पोशिका बहन, पोशिका बहन आप कैसे हैं? पोशिका बहन कभी कभी उनको सुनने को मिलता है ना, और सबकी तो बात हो भी जाती है। ठीक है, सब ठीक है बहन आप जी। ठीक हैं? और सुभाष भाई, बच्चे सब ठीक हैं? हाँ सब ठीक। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू बाबा। Om Shanti.
ये भारती साहा, उनको मैं नहीं पहचानी एक्चुअली। ओम शांति भारती साहा। कहाँ से जुड़े हैं भारती बहन? ओम शांति ऑल ऑफ यू। हर्ष कुमार, कल्पना बहन, मंजीत बहन, प्रेम बहन, भारती बहन, ओम शांति ऑल ऑफ यू। ओम शांति दीदी, ओम शांति। थैंक यू। शांति, ओम शांति कल्पना बहन। आप ठीक हो? हाँ, हम लोग सब ठीक है। यहाँ अभी ठंडा खूब बढ़ गया है इधर भी। ओम शांति, थैंक यू। ओम शांति सभी के लिए। हेलो, ओम शांति राजेश बहन। ओम शांति संध्या बहन, कैसे हैं आप? बस मैं ठीक हूँ। जो आप पूछ रहे थे ना